Today we are going to discuss our second lecture, which is about the introduction to the subject. And after this lecture, you will have to study the book, the first chapter of the book, in order to grasp a better understanding about this subject. Written as such, these are a little different as compared to what you will find in the book. So that is why after this lecture you should also study from the book. Now, first of all, to begin with, we must know the meaning of the name thermodynamics. So as you can see, the thermo stands for heat. We already know this. It is a word which means heat, and dynamics is actually changing aspect, something which is changing. In Urdu, you call it harkiyat. So the subject thermodynamics would be hararat or ye harkiyat. Har harkiyat it is called in Urdu. So in English, that would be simply power developed from heat. So this is the literal meaning of the word. The dictionary meaning of the word is power developed from heat. Now, at the advent of industrial revolution, that is to say around 1850s, steam locomotives had been invented and used for transportation. So what happened was that around the time of these steam engines, those rail engines which would use steam, uh, they were actually using coal for the firing of this boiler, and so that the steam is made. So the basic question was in the mind of the people was that how many miles from a given mass of coal. So this was a simple question that people would ask: how many miles from a given mass of coal. So uh, this is actually a question which was in the mind of many scientists at that time. So they were actually finding out ways to increase the efficiency of those steam locomotives. So from a lesser mass of coal, they required more mass of steam, because that steam was actually used in the piston cylinder arrangement of those steam engines. Now, heat engines, what is a heat engine? Now, we will study this in detail later on in chapter 5. But any engine which is doing this work, that it is converting heat into power, that would be called as a heat engine. So, heat engine, for example, the steam locomotive was one of the earliest heat engines. Now, heat engines are only a part of the larger subject of thermodynamics. So, though the name has background in the steam locomotive engine, the name thermodynamics, however, you will not only study this single heat engine in the subject, but you will study so many different things in the thermodynamics, which have now become an integral part of this subject. Henceforth, you can know this that thermodynamics has relevance in physics, chemistry, biology, mechanical engineering, chemical engineering, polymer engineering, petroleum engineering, and even electrical engineering, and many other fields also. So many of the engineerings here, they will study, or they are actually going to study this subject, as well as all the basic sciences. Why is this so? Because it is dealing with the changes in energy, and energy has relevance in all the fields of science. So, another definition, or rather, better, you can say, words to describe this subject would be that it is an exact science. It is a real science. Okay, यानी कि exact science का मतलब है कि ये real science है जो observation के ऊपर based होगा. So it is an exact science that describes quantitative interrelationship of various forms of energy. Quantitative means that you will talk in numbers, not only describe things by their name, but you will also tell their amounts. Okay, so interrelationship of various forms of energy, यानी एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स की जो रिलेशनशिप है उसका क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो आप इसमें पढ़ेंगे, accompanying the changes that occur in nature.
कि उन चेंजेस को जो कि नेचर में जो है वो होते हैं। वट एवर इट इज़, वेदर इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल अपरेटस, द रूल्स ऑफ नेचर आर ऑलवेज फॉलोड। Okay, चाहे आप रियल नेचर में है, चाहे आप जो है वो इंडस्ट्री में है, रूल्स ऑफ नेचर हर जगह फॉलो किए जाते हैं। सो दैट इज़ वाई वी हैव सम लॉज नाउ. Now, the laws are actually the foundational pillars of the subject. Everything that we do in the universe is according to a certain law. Okay, हम हमेशा कोई ना कोई law को follow कर रहे होते हैं. Now, if you talk of a law in science, so law would be something that is actually uh, telling you that if there is some phenomenon, so what is that phenomenon? So when you say what is that phenomenon, that is called a law. ठीक है, जब आप कहते हैं कि कोई phenomenon यानी कि कोई काम, कोई अमल जो है नेचर में होता है, तो वो क्या है, काम जो होता है उसको आप कहेंगे कि वो लॉ है। ठीक है, क्या है वो लॉ। और आप कहेंगे कि क्यों है, अगर आप कहेंगे कि वो क्यों है तो फिर वो कहलाती है थ्योरी। ओके, सो वाई इज एक्चुअली थ्योरी एंड व्हाट इज लॉ। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड्स बने हुए हैं। सो नाउ व्हाट आर द फिनोमिनन व्हिच आर रिलेटेड टू द चेंजेस इन एनर्जी। Energy, we know already, can change forms one form to the other form. However, one thing is for sure that energy, 1 minute. Now, one thing is for sure, that whenever energy is changing form, so rather not one thing, two or three things, which are actually these law. So whenever energy is for changing from one form to the other form, it will have to follow some laws. This is actually what is very important about this subject. All these subjects of science, they have some laws. Whether you study electricity, you study magnetism, you study chemistry, you study physics, so all you study gravity, all have laws. So similarly there are laws in thermodynamics also, and these laws, as we were discussing yesterday, there are four laws, but the name is first, second, third and zeroth. We will study these laws in detail in our subject. However, just as a feeler what these laws are, so the first law is actually equivalence between various forms of energy. Now, there are various forms of energy. We will study these forms one by one, and we will find out that these forms are actually, if one form is changed, the other form or the other forms reappear. So the total quantity of the energy is not changing in the universe. This is actually what is told to us by the first law. Whereas the second law is telling us something quite new, which is never told by the first law. That is actually the constraint, constraints यानी पाबंदी कर दी, the ways energy changes its forms. ठीक है, सेकेंड लॉ क्या करता है, बुनियादी तौर पे वो ये कुछ पाबंदी लगा देता है कि कौन कौन सी फॉर्म्स में आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सेकेंड लॉ बता देता है। यानी कि यूँ कह दीजिए कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं, तो क्या दूसरी से पहली में भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और अगर आ सकते हैं तो किस हद तक आ सकते हैं। ये बात आपको फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता, वो सिर्फ ये कहता है कि टोटल सेम है। किस हद तक जा सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी में, दूसरी से पहली में वगैरह, ये आपको बताएगा सेकेंड लॉ। Now, the third law is an attempt to evaluate some thermodynamic functions. Now, some of the thermodynamic functions, especially entropy, which are very important, can be evaluated for some fluids. And you require a very strict or very expensive experimentation for that. So it is actually a third law is based on that. However, as you should say, in context of us, mean chemical engineers, the applications are not very wide and far. So that is why we will only discuss this law, but we will not go in the detail.
Now, the zeroth law is an operational notion of temperature, because you cannot define temperature also. See, these are primitive quantities. So, what do we mean by temperature? So, a kind of तस्वर जिसको उसमें लिखा कि एक नोशन है, एक आइडिया है आप टेम्परेचर का, वो आपको इस लॉ के तहत जो है वो मिलता है. Now, the validity of these laws lies in the absence of contrary experience. ये बड़ी अहम बात की है. The validity of these laws lies in the absence of contrary experience. यानी इन laws का valid होना, यानी इनका सही होना कि ये सही है बात जो कही आपने, ये जो laws में लिखा है ये सही लिखा हुआ है, ये सही बात है. ये क्यों है? ये इसलिए है कि आपको इसके अगेंस्ट कुछ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ. ठीक है, यू हैव नेवर सीन एनीथिंग अगेंस्ट these these statements, so that is why you say these are true. ठीक है, ये ऐसी बात है. Now actually the law is the most fundamental statement in science, and the most primitive one also. Primitive means कि सबसे जो है वो बुनियादी बात या पुरानी बात जो आप कह सकते हैं, जो बेसिक बात आप कह सकते हैं, उसको उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते. वो जो भी चीज़ें लॉज के अंदर यूँ कह लीजिए कि जो आपने फंक्शंस जो है वो इस्तेमाल किए, या जो बात आपने की है, या जो आपने आइडिया दिया है, उसको मज़ीद आप कुरेद नहीं सकते हैं. ठीक है, वो आपके आपके इख्तियार से बाहर होता है. तो ये फिर उसी की बात को ही हम लॉ कह देते हैं. ठीक है, क्योंकि उसकी असल हकीकत जो है वो इंसान को नहीं मालूम होती है. नाउ वेज टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, ये लिखा वेज. ठीक है, एक्चुअली सम ऑफ द बुक्स वुड से काइंड्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, बट एक्चुअली आई हैव रिटन वेज, ये तरीका है पढ़ने का. बिल्कुल इसी तरह से एज यू से दैट यू आर एक्चुअली रीडिंग एन एसे. ठीक है, यू कैन रीड एन एसे, यू कैन रीड अ स्टोरी, यू कैन रीड अ नॉवल, यू कैन रीड अ पोएम. सो ऑल दीज आर एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, ये एक्सप्रेशन के फॉर्म्स हैं. आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप किसी तरह भी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं. आप चाहें तो आप पोएम पढ़ें, आप चाहें तो स्टोरी पढ़ें, नॉवल पढ़ें, बुक पढ़ें, ऐसे पढ़ें वगैरह. So same is the case in this science. So there are different ways that you can describe these things, these laws and their consequences can be described in many ways. So few of the important ways are these ones. The most we should say the first one, the pioneering one, was the classical form. So the classical thermodynamics, the way it was first developed in context of steam engines. Context का मतलब है कि उसके मद्देनजर, ठीक है, यानी उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी स्टीम इंजन्स को मद्देनजर रखते हुए आपने जिस तरह से इस सब्जेक्ट को बनाया, डेवलप किया, वो जो तरीका है उसको कहा जाता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स. So that would focuses on macroscopic properties without knowledge of atoms or molecules. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पे हम बातें करेंगे. मिसाल के तौर पे टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक होगी, यानी पूरे सिस्टम की. हमें ये नहीं मालूम कि जो मैटर है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है. ये दरियाफ्त जो है वो बाद में हुई थी. क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बाद ये जो है एटॉमिक थ्योरी आई थी. बोर्ड्स, एटॉमिक मॉडल वगैरह जो है वो इसके बाद आए थे. तो थर्मोडायनेमिक्स है क्लासिकल, वो उससे पहले ही डेवलप हुआ था. सो दैट इज़ वाई दैट इज़ द मोस्ट वी शुड से ओल्ड फॉर्म or to study the subject that is does not incorporate the knowledge of atoms and molecules. So, equilibrium and reversible thermodynamics. When the system studied is in equilibrium, ठीक है, जब आप सिस्टम को पढ़ते हैं और वो इक्विलिब्रियम पे है, एक सिस्टम आपने स्टडी किया, आपने ये इमेजिन किया पढ़ने से पहले कि जो आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पर होगा. तो उसके बाद आपने कोई तब्दीली की, और तब्दीली के बाद आपने दोबारा से सिस्टम को स्टडी किया, लेकिन उस वक्त भी आपने यही एज्यूम किया कि चेंज होने के बाद भी इक्विलिब्रियम जो है वो बन चुका है. ठीक है, यानी दोनों स्टेट वन और स्टेट टू जो है वो आर एट इक्विलिब्रियम. So if you are doing this thing, so finding the changes between two states of the system at equilibrium, so that kind of study will be called equilibrium thermodynamics. Sometimes it is also called reversible thermodynamics. Now the third is chemical thermodynamics.
Now, don't confuse chemical thermodynamics by chemical engineering thermodynamics. Actually, chemical thermodynamics is actually a way, or it should be rather a kind now, in which you only study the energy changes during a chemical transformation. So, if there is a chemical reaction and you are studying the thermodynamics of only a chemical reaction, that thermodynamics is called chemical thermodynamics. Number fourth is the statistical thermodynamics. This is also called statistical mechanics. ये एक ही नाम है, दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं. Now, when the calculations of thermodynamic properties are based on statistical principles. ठीक है, जब आप statistical principles के ऊपर जो है वो बेस करेंगे और उसकी बुनियाद पे thermodynamics की properties को calculate करेंगे, मिसाल के तौर पे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे, टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम करेंगे कैलकुलेट वगैरह स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे, तो फिर वो जो तरीका है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which a large quantity of numbers is studied. Okay, and formulas are formulated which are specially used in calculation of probabilities. So you might have a little knowledge of this from your mathematics course. However, when you do experimentations and research in science, or rather in engineering in any way, so you require the use of statistical principles, because you have a lot of data and you have to maneuver that data and you have to arrive at some realistic results from that data. So you use these statistical principles. So those same principles could be used for the calculation of thermodynamic properties. That way would be called statistical thermodynamics. However, you should note that in order to study this subject, you must have some knowledge of statistics beforehand, which as such at this level students do not possess. So generally, this is actually a special kind of study. Number fifth is again another special kind of study which is called molecular thermodynamics. Now, when the macroscopic properties of thermodynamics are calculated from molecular level using principles of statistics. Okay, so it is rather similar to the statistical thermodynamics, but here you are focusing on the properties of the molecules, and again you are applying the principles of statistics on molecules, and then you are calculating the macroscopic properties. The macroscopic properties are again, for example, temperature, pressure, volume, internal energy, entropy, etc. So that method would be called molecular thermodynamics. So in a way, fourth and fifth are actually similar. The only new thing in fifth way is actually that you are focusing on the properties of the molecules. uh, so there are actually very good books and very much related to the chemical engineering thermodynamics. For example, one of the books which we were discussing yesterday is Simon and Macquarie Molecular Thermodynamics book, which you can study as a reference book also. However, again here there is a precaution or a note that you must have some basic knowledge of statistics in order to properly understand this method of study. So again, these 4 and 5 are not very common methods for chemical engineers. Now, number 6, non-equilibrium or irreversible thermodynamics. Now, this is a new, relatively new method and new research in which you deal with irreversible or natural processes which are occurring in nature. So the real processes that are occurring in nature cannot be studied by the first two forms, यानी कि classical or equilibrium thermodynamics. For that, you require irreversible thermodynamics. But you will not confuse this irreversible thermodynamics with the kinetics. This is a different subject. But we should say a relatively new one. Again, for the course of the BSc study, this would be actually a method or a kind of study which is actually uh, too difficult or tedious rather for us. So what are we going to study then out of these 6 ways? We are actually going to study the first and second forms. So we will study classical thermodynamics and equilibrium thermodynamics. So all of the book, this book, first thermodynamics 1 as well as thermodynamics 2, these are based on classical principles, classical method of study, and our systems which we are going to study are considered to be at equilibrium.
This is the oldest method of study, but it does not mean that it does not have any significance today. It definitely has significance today, and it is actually used for the application purposes. So the other forms, fourth, fifth, and sixth, are actually those forms which are used by physicists. फिजिक्स के जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है. जब हमें अप्लाई करना है थर्मोडायनेमिक्स को तो हमें क्लासिकल या इक्विलिब्रियम केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा बेटर है. नाउ ईच वे हैज़ इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, यानी कि अच्छी बातें भी है बुरी बातें. फॉर एग्जांपल, we cannot calculate absolute values of many thermodynamic functions in classical thermodynamics. कुल, एब्सोल्यूट यानी कि कुल, हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में किस थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की, बहुत से थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं निकाल पाते हैं. आपको मालूम है, जैसे यू आर यूजिंग टेम्परेचर, सो यू आर यूजिंग टेम्परेचर इन योर कैलकुलेशंस, यू विल ऑलवेज यूज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Instead of degree Celsius, you will add to 73.15 to convert it into Kelvin. So that makes it an absolute temperature. Now, this is actually the absolute value. So you might not be able to calculate the absolute values in this classical thermodynamics. However, we may be able to calculate these from statistical thermodynamics. हाँ, अगर absolute है तो हम हो सकता है कि statistical से उनको calculate कर लें. ठीक है, ये मुमकिन हो सकता है. Another important thing is that even though we cannot calculate the total values, but in context of chemical engineering, it is not actually required also. यानी हमारे केस में वो चाहिए भी नहीं होती. अगर हम नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बिकॉज हमारे केस में वो अक्सर हमें चाहिए ही नहीं. ठीक है, तो इस वजह से भी ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है. Now, importance of thermodynamics. Fundamental laws. Those four laws are actually called the fundamental laws. Fundamental means bunyadi. These laws have been found true in the macroscopic world. यानी कि हमारी जो दुनिया है जिसमें हम जिंदा हैं, ये उसमें सच्चे पाए गए हैं. मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि हम जो है वो मॉलिक्यूल्स को नहीं स्टडी करेंगे, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ऊपर जो हुआ है उसको मैयर कर रहे हैं. हमने एनर्जी पहले मैयर कर ली, बाद में मैयर कर ली, हमें टोटल सेम मिल गया, हमने कहा कि जी फर्स्ट लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है या ये फर्स्ट लॉ ही के तहत हुआ. अब हकीकत में ऐसा हुआ या नहीं ये हमें नहीं मालूम. ठीक है, सो वन कैन इमीडिएटली डिड्यूस इफ अ सर्टेन प्रोसेस विल वर्क और नॉट बाय टेस्टिंग द प्रोसेस टू पास द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये भी वही अगली मतलब नई बात की है उसने लॉज ही के मतलब कि पहली बात तो ये कि दीज लॉज हैव बीन फाउंड ट्रू इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. जिस दुनिया में हम जिंदा हैं, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, हम अपने 5 जो हम हिस्से हैं हमारी, ठीक है, हिस्स देखने की, हिस्स सूंघने की, चखने की वगैरह, टच की. सो वी सी दैट एवरीथिंग what we see from our eyes, or we hear from our ears, we have found these laws to be true in our world in which we are living. So we say that these are actually laws. ठीक है, तभी हम इनको लॉ बोल रहे हैं क्योंकि ये हमें हमेशा सच्चे नज़र आते हैं. And another thing very important, that we can test process whether a certain process will work or not. कि कोई मशीन है बनाते हैं, ठीक है, हम कोई मशीन बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये मशीन काम करेगी, और करेगी या नहीं करेगी ये हम उस मशीन को चलाए बगैर जो है हम लॉज के तहत उसको टेस्ट कर सकते हैं. यानी अगर तो वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को जो है वो फॉलो करती है तो फिर तो वो मशीन चलेगी, अदरवाइज वो मशीन नहीं चलेगी. ठीक है, सो ये दो बातें हैं. एक तो ये कि क्या ऐसी मशीन बनाई जा सकती है या नहीं, दूसरा है कि क्या ऐसी मशीन चलेगी या नहीं. ठीक है, ये दो बातें हैं. ये सारी डिटेल्स जो है हम लोग स्पेशली चैप्टर 5 में डिटेल में इनको देखेंगे. नाउ, जनरलाइजेशन फ्रॉम लॉज, यानी कि उन लॉज को फिर आपने और ज़्यादा जो है वो अप्लाई किया और नई नई बातें जो है उनमें दरियाफ्त हुई, ईजाद हुई. सो मैनी अदर लॉज हैव बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम द फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, बहुत से और लॉज हैं, बहुत से और कवानीन हैं जो जिनको वो हैसियत हासिल नहीं है जो फंडामेंटल लॉज को है, क्योंकि वो सबसे ऊपर हैं. लेकिन उन लॉज के तहत ही और बहुत से लॉज जो हैं वो लोगों ने दरियाफ्त कर लिया. फॉर एग्जांपल, वेंट हॉफ एक आदमी था, उसने एक जो है वो ये बनाया लॉ जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का है. ठीक है, सो वेंट हॉफ लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो बना लॉ.
फिर राउल्ट्स एक आदमी था राउल्ट, उसका लॉ था वेपर प्रेशर्स का। सो राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर फेज रूल जो हम चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे लॉज जो हैं आप देखेंगे खुद ब खुद कि ये उन्हीं लॉज से किसी ना किसी तरह से अखज़ किए गए हैं या उनकी मदद से यहाँ तक पहुँचा गया है। सो इस वजह से इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आपको मालूम है कि यू इफ़ यू मिक्स सर्टेन reactants, a chemical reaction may take place or it may not take place. Okay, may take place, may not take place. So which direction the it will proceed spontaneously, ठीक है। spontaneously यानी कि खुद ब खुद। ये spontaneous का मतलब ये होता है कि खुद से हो जाए कोई चीज़, उसको नेचर में spontaneous बोला जाता है। So thermodynamics can predict in which direction the reaction will proceed spontaneously, ठीक है, किस तरफ वो जाएगा। क्या प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की तरफ वापस जाएंगी उन हालात में जो आपने पैदा किए, या जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, या कोई दरमियान में वो रुक जाएंगे और इक्विलिब्रियम बन जाएगा, वट एवर, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन। सो हु विल टेल यू द थर्मोडायनेमिक्स। Now, it does not mean that you can do everything with thermodynamics. Obviously, there are so many limitations also. Number one, it does not furnish any specific and direct information about the nature or structure of matter. As such, if you are studying thermodynamics, even if you are studying molecular thermodynamics, so you are not actually studying the molecules and atoms, you are actually only taking some information which has been found from other sciences, for example atomic theory or the Max Planck theory. Okay, so we are actually not having a lot of information about the nature of the matter or the structure of the matter. So this is actually an information which is a study which is out of our scope. We are actually dealing only with the changes in energy, for which we may require some knowledge of the structure or nature of matter. However, as such we are not doing this study in our subject. So पहली लिमिटेशन ये होगी कि ये एक एरिया हो गया जो हमारे डोमेन से बाहर है। नंबर 2, it cannot calculate the rate of a chemical reaction, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का रेट नहीं निकाला जा सकता। ये जो स्टडी है ये काइनेटिक्स की है। सो केमिकल काइनेटिक्स और रिएक्शन काइनेटिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, विच इज़ अगेन अ सेपरेट फुली फ्लेजेड सब्जेक्ट। आप पढ़ेंगे भी अपनी क्लासेस में आगे। सो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये उसके स्कोप से बाहर चली गई बात। तीसरी बात भी एक अहम बात है जो अक्सर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैटर डज नॉट हैव एनी कंसिडरेशन एक्सेप्ट एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, ओके। मैटर, ये mass, it does not have any consideration except as a carrier of energy, यानी सिर्फ वो एनर्जी को कैरी करेगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट अप करें तो एनर्जी उसमें थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, हम इस तरह से समझते हैं। वी नो फ्रॉम आइंस्टाइंस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर दैट मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमें पता है कि मैटर जो है वो एनर्जी की फॉर्म है इस इक्वेशन के तहत। However, matter is not considered as a form of energy in classical thermodynamics problems. अच्छा, ये बात थोड़ी सी मबहम है, बहरहाल मैंने इसी तरह लिख दी कि however matter is not considered as a form of energy in classical thermodynamics problems, यानी जो हम पढ़ेंगे उसमें हम मैटर को एनर्जी की फॉर्म कंसिडर नहीं करते, या यूं कहें कि हम उसकी परवाह नहीं करते, ऐसे लिखना चाहिए था कि हम उसकी परवाह नहीं करते क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में। द रीज़न इज़ वेरी क्लियर, यू नो that in chemical reactions a lot of energy is not involved, okay। It is only in nuclear reactions that some energy is involved, and nuclear reactions we are not going to discuss here. So in classical thermodynamics problems, whatever the energy is, we will consider that energy as energy residing in the matter. However, truly speaking, it is actually matter is a form of energy, and any change in matter, whether it is a chemical change or a nuclear change, all in all cases matter is converted into energy. If you study physics, you will find out that even in chemical reactions, when heat is evolved, so that is actually from matter. So matter is released. So there is some loss of matter in chemical reactions also. However, that loss is so small that for practical purposes it is totally or rather apparently insignificant for us. So we do not consider that.
सो इस तरह से हम सिर्फ एनर्जी का जिक्र कर रहे होंगे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चलेगी, या जो है वो एक मैटर से दूसरे मैटर के अंदर चलेगी और फिर उस मैटर से बाहर आ गई, इस तरह पढ़ेंगे। मैटर को हम साइड पे रख देंगे, तो हमारा केस थोड़ा सा जो है वो बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। Number four, classical thermodynamics cannot provide absolute values, neither does it explain why these properties arise in a system. हम चूंकि क्लासिकल पढ़ेंगे इसलिए ये लिखा खसूसी तौर पे इसके बारे में कि इट डज नॉट प्रोवाइड, इट कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ठीक है, हमें नहीं मिल सकती हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जो बात है, ये हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे आगे चल के, चूँकि ये अभी हो सकता है आपको प्रॉपरली ये बात थोड़ी सी क्लियर ना हो रही हो, बट वी विल स्टडी the absolute what is an absolute quantity. We will study this in detail, for instance in our chapter second and third. Now and there is another very important thing. Classical thermodynamic does not explain, or it cannot explain why these properties are there. Okay, it cannot tell you why these properties are there, it is out of our scope. Rather, probably not only in thermodynamics, it is very difficult to find out the origin of these properties, for example volume, pressure, temperature. It is out of our scope. So, number five, being independent of atomic nature of matter, thermodynamics cannot predict the mechanism of chemical transformations. ठीक है, चूंकि आपने ऊपर पहले जो चीज़ पढ़ी थी पहली लिमिटेशन में कि आपने देखा कि देर इज़ नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्ड्स क्या हैं, फिजिकल बॉन्ड्स हैं, आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, कोई ऐसी स्टडी आप नहीं कर रहे, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी सच स्टडी. सो दैट इज़ वाई you cannot say what is the mechanism. Okay, intermediate product बनती है, फिर intermediate product is further transformed into real products. Some bonds are broken, new form bonds are formed, etc., etc. So such kind of study is not done in thermodynamics, because the very reason is that it is truly independent of the nature of matter. Classical thermodynamics, we do not know about the atoms at all. Even if there is no atomic theory, even then we can study our thermodynamics. यानी हम ये भूल जाएं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम फिर भी अपना थर्मोडायनेमिक्स जो है वो थर्मो वन थर्मो टू आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं इस नॉलेज के बगैर भी, क्योंकि ये बने ही उस वक्त थे जब एटॉमिक थ्योरी बनी ही नहीं थी, ये उसके बाद की बातें हैं. So this was actually a brief introduction to our subject of this thermodynamics. Now, as far as chapter 1 is concerned, if you will go through the first chapter, which is again the introduction, you will find out slightly different things from which we have studied today. Now, many of the things are actually already explanatory to you when you will go through the book. For instance, when you study the that let me see अगर ये खुल जाए तो. So when you study that about the temperature, about the pressure, and about the volume, then you can find out how you convert from, let's say, degree Celsius to Kelvin. How can you convert from degrees Fahrenheit to Rankine? Similarly, then I will say that what are the measures of amount or size? How do you define a mole? How do you define, let's say, Kelvin? And how do you define 1 kilogram? These are things which you have already studied in your FSC classes. So, as such, I would say that this is your assignment. So, today, after this lecture, or when you find out the time on this weekend, so you go through this first chapter. Okay, पहले चैप्टर से जाइएगा. स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजर्स ऑफ अमाउंट और साइज, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, हीट, देन साइनॉप्सिस मीन यानी कि उसको थोड़ा क्लोज करेगा, समरी है, एंड देन द प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो यू सी द इंट्रोडक्शन इज़ वेरी सिंपल. स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट और सेकेंड लॉज का वो जिक्र करता है. फिर वो एक बड़े अच्छी इसने ये डायग्राम बनाई जो पहले ही बुक में नहीं थी, कि आपको बताएगा किस तरह से आप जो है वो चलेंगे. यानी हम यहाँ से चलेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 2 में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ. इन चैप्टर 5 वी विल स्टडी द सेकेंड लॉ. ठीक है, देन वी विल स्टडी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप्स, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, वो चैप्टर 3 है.
ठीक है। सो दो चीज़ें आपने की, लॉज और प्रॉपर्टी डेटा कोरिलेशंस और मॉडल आपने पढ़े। चैप्टर 4 and 11 इस ये हम नहीं पढ़ेंगे। एनर्जी नीडेड टू चेंज टेम्परेचर, फेज और कंपोजिशन, दो दीज आर वेरी गुड चैप्टर्स. Chapter 4 is very good, excellent for material, for energy balances, for stoichiometry, etc. However, because you are studying similar things in stoichiometry, so as such this chapter will not be studied. Now after this knowledge, the knowledge of laws and the knowledge of properties, you can do mathematics down. The mathematics is done in chapter 6 and 10. These both you will study in thermo 2. However, little of chapter 6 will be studied here also, the diagrams and tables. And finally, the applications. So this application जो ऊपर की तरफ है, chapter 12, 13, 14, 15, it is thermo 2 application. And this application, chapter 8 and 9, is thermo 1 application. So we will do basics, CLO1, chapter 2, 3, 5, and then beginning from chapter 6 to 8 and 9, these are the applications. ठीक है, इस तरह से आप इसको स्टडी करेंगे. देन सम क्वेश्चन, ये कुछ सवाल आपको कर रहे हैं, ठीक है, ये सवाल हैं वो जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में डील करने पड़ सकते हैं. अच्छा, देन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपको मालूम है. फॉर एग्जांपल सिस्टम इंटरनेशनल जो है, सिस्टीम इंटरनेशनल है, ये एसआई सिस्टम जो है. सेकंड क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, किलोग्राम की क्या डेफिनेशन है, वो अब बदल गई है. बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको वो बता रहे हैं. देन प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेफिक्सेस हैं और उनके नाम हैं. फेमटो 10⁻⁻15 से लेके पीटा तक, जो 10⁻+15 है. ठीक है. देन कुछ एग्जांपल्स हैं छोटी सी. मेजर्स ऑफ अमाउंट और साइज है, मोल है, मैस है, वॉल्यूम है. ये सारा आपने देखना है. हम इसको फिर डिटेल में जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. लेकिन कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको we will try to finish this chapter because it is very basic chapter, and a lot of detail is required from chapter 2, 3 especially, and others. So these things, because these are more or less similar to your earlier courses also, so we are not going to spend a lot of time here. Okay. सो यहाँ से ये कुछ चीज़ें आपको नहीं भी अभी शायद मालूम होंगी. मिसाल के तौर पे ये प्रेशर को कैसे, डेड वेट गेज है, ये उसने तस्वीर दिखाई आपको, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है. हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर किसको बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे. वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, वी विल स्टडी दिस. एंड एनर्जी की दो फॉर्म्स बताएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. एंड देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर दीज फ्री फॉलिंग बॉडीज के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. सो देन फाइनली ही विल ऑल्सो टॉक अबाउट हीट. ठीक है, वो हीट के बारे में भी जिक्र करेगा और फिर वो बताएगा कि शुरू में जो है वो हीट को क्या बोला जाता था, इसको कहा जाता था कैलोरिक. एंड देन ऑब्वियसली सम अदर थिंग्स. सो देन देयर इज साइनॉप्सिस. सो एज सच, please go through this, do these 4 examples, and read the problems. Few of the problems are very simple, you can straight away do them, but few of the problems are very complex. So I will tell you next lecture which problems we are going to do and which we are going to leave. But please do study. And secondly, please give me some time, if you can give tomorrow, or then when you come to the university, we have to arrange one extra lecture because our first lecture was not there. ठीक है, यहाँ पे मैं रोक देता हूँ. अगर कोई सवाल है तो आप कर लें. अच्छा, सी आर्स काइंडली अटेंडेंस आपने लगा लेनी है. ठीक है, सी आर वो एक्सेल की शीट बना लें, उसमें आप लोग अटेंडेंस जो है वो कर लें. और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे करें कि मैसेज कर दें सीआर्स को कि वो प्रेजेंट हैं, ताकि उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए. ठीक है जी. कोई बात है? नो क्वेश्चन. ओके, देन वी कैन. नो क्वेश्चन. सर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करें कि टीम्स पे ही मतलब वो प्रेजेंट. क्या कहूँ मैं, सॉरी दोबारा बताते हैं. टीम्स पे ही अटेंडेंस वहाँ से ही सर मार्क हो जाएगी. अच्छा ठीक है, हाँ चलें. अब ये होगा, इसमें नई ऑप्शन होगी. प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस ऑन टीम्स. ठीक है.
आई विल डाउनलोड दी अटेंडेंस, मेरे पास भी है ऑप्शन, मैं डाउनलोड कर लूँगा। लेकिन आप लोग भी काइंडली जो है वो बना के उसमें जो है वो टीम्स के ऊपर अपनी अटेंडेंस जो है वो करवा दीजिए, ठीक है। हाँ, ये अभी आ भी रही है आप लोगों की, मार्क कर दिया अपनी अटेंडेंस। सर वो कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी काइंडली अपलोड कर देते हैं इसमें। अच्छा, वो इस तरह हुआ, मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी तो मुझे लगा कि ये रिकॉर्डिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मिली नहीं है। तो मैं देखता हूँ, अगर तो मुझे मिल गई तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। बट एनीवे इंशाल्लाह मंडे से आप लोगों ने आ जाना है। ये एक दो लेक्चर्स हैं जो हमें ऑनलाइन करने पड़ रहे हैं, तो मंडे से जब आप आएंगे तो फिर हम ये चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं जब भी आप कहेंगे तो, ठीक है। ये अटेंडेंस जो है अभी मैं मतलब ऑन ही रखूँ फिर लेक्चर को। सर आप बंद कर देंगे ना लेक्चर, तब भी वो मैसेजेस आते रहेंगे। अच्छा ठीक है, चले मैं फिर बंद कर देता हूँ, आप लोग अटेंडेंस लगवा दें अपनी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।